Good evening, students. I am Bhupesh Bansal, Director Anand Prakash Educational Academy, and your mentor for the subject Physics. जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था मोशन के बारे में, हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उसके बाद में हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव किया था। आज जैसे मैंने बोला था हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लें। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर है, बट हम लोग जनरली बहुत सारे यूनिट्स यूज करते हैं। कॉमनली यूज यूनिट है सेंटीमीटर, किलोमीटर। इसी तरह टाइम का ऐसा यूनिट इज सेकेंड, बट वी हैव बीन यूजिंग द यूनिट्स एज मिनट्स एंड आवर्स ऑल्सो। जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, स्कूटर ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, गाड़ी की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। सो वहां हम लोग किलोमीटर्स पर आवर में बात करते हैं। बट जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जरूरी होता है कि सारे यूनिट्स एक ही फॉर्मेट में हो। अगर एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में दिया है, डिस्टेंस किलोमीटर पे दिया है, टाइम मिनट्स में निकालना है, सेकंड में निकालना है, तो आपको वो सब देख करके यूनिट्स को एक ही फॉर्मेट में लाने की आवश्यकता रहेगी। हाउ डू वी कन्वर्ट द यूनिट्स? लाइक वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters and 1 hour is 3600 seconds. So 1 kilometer per hour is 1000 meters upon 3600 seconds, or 5 by 18 meters per second. Similarly, 1 meter per second is 18.5 kilometers per hour. इस चीज को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसका सिर्फ कन्वर्जन उसमें डालेंगे तो आपको इमीडिएटली वो फॉर्मूलाज याद आ जाएंगे। नेक्स्ट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी के देखे थे, और बाकी मैंने कहा था कि होमवर्क है, आप पता कीजिए क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके पता करने थे। आज हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इससे पहले कि हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएं। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, स्पीड एस स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी वी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्पीड हम लोग सिंपल लिखते हैं 20 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी लिखते हैं 20 मीटर्स पर सेकेंड इन द गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिफरेंसेस क्या हैं? स्पीड की डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने किसको बोला था? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इन अ गिवन डायरेक्शन, सो दैट अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और जो डिफरेंसेस हैं, स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। वेलोसिटी स्पीड से कम हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है जिसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और ये 2 आवर्स में कवर करता है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? v इज इक्वल टू एस अपॉन 2, 50 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी, बिकॉज he has been traveling only in single direction, so velocity also is same, 50 kilometers per hour. एक आदमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, यहां वापस पॉइंट ए पे आता है, he takes
1 second to cover it. So it is 2 pi r upon 1 or 2 pi r meters per second. What is this? This is the speed. Whereas velocity is a to a, total displacement is 0. So velocity is 0. So we have to be very careful. Velocity can be 0. Velocity can be negative. Velocity can be equal to speed, but velocity can never be more than speed. Next is, we can change the velocity either by changing the speed. That means instead of 2 hour, if I say 1 hour, so speed becomes 100 hours, so velocity also will become 100 hours. And also by changing the direction. If I say he travels another 100 kilometers in 1 hour in this direction, so his displacement is 100 root 2 and time taken is 2 hours. So what is his velocity? 50 root 2 southeast. So we can change the velocity by changing the direction. These are some of the important differences between speed and velocity. Now, as promised, let us move on to the numericals. First numerical is a person travels from point A to point B, which is 10 meters, from B to C, which is 3 meters, from C to D, which is 6 meters. What is the total distance covered by the person? So, to calculate the distance, we have to simply add the three distances, that is 10 meters plus 3 meters plus 16 meters. So, total distance is 19 meters. But if we have to find the displacement, let us see what is the displacement. Shortest path is AD. If I call this point as E, AED is a right angle triangle, whereas AE is 4 meters, ED is 3 meters. So AD will be, as per Pythagoras theorem, 5 meters. So his displacement is 5 meters AD in the given direction. Clear? Similarly, if a person is traveling in a circular path of radius 7 meters, starts from point A, comes back to point A, what is the total distance covered? Total distance covered is the circumference. So that is 2 pi r, or 2 into 22 by 7 into 7, 7 gets cancelled, so 44 meters. But what is the displacement? Displacement is 0, because he starts from A and at A, shortest path is 0. But if I say, what is the displacement till AB? Distance will be 2 pi r upon 2, but what is the displacement? Displacement is the diameter, that is 14 meters. If I at 90 degrees, that means C, what is the displacement? This is 7 meters, this is 7 meters, so this is 7 root 2 meters. Displacement is 7 root 2 meters. Whereas distance is 2 pi r upon 4. What is the displacement? Displacement again is 7 root 2 meters. Distance is 2 pi r into 3 upon 4. So you have to be very careful in distinguishing between the distance and the displacement. Next question. If a car travels at a uniform speed of 40 kilometers per hour, 40 kilometers per hour for 3 hours, what is the distance covered by the car? We have the formula V is equal to S upon T, or S is equal to V into
t, that is 40 into 3 or 120 kilometers. Question can also be the average speed of a car is 40 kilometers per hour. In this case, I am not saying that the car is traveling at uniform speed. The average speed, then we have to put a bar over here, which means average speed is 40 kilometers per hour. Again, answer remains the same. Next questions. This was a question basically on the average speed or our uniform motion. Next question. A car starts from rest, that means u is equal to 0, attains a speed of v is equal to 40 kilometers per hour in 30 minutes. What is its acceleration? We all know the first equation of motion, that is v is equal to u plus at. But before that, remember this units. Here the unit is hour, here the unit is minute. So let us convert it into hour. I normally use fraction because it is easier for the calculation. I will write half hour. Let us put these values here. U is equal to 0. 40 is equal to 0 plus a into half, or a is equal to 80 kilometer per hour square. Next question, again on the same. What is the total distance covered by the vehicles in this 30 minutes? That means I have to find S also. So I use the second equation of motion. This is my second equation of motion. U is 0, so ut will be 0 plus half. A we have calculated as 80. T is half. So I write half into half. This makes it 40, 20, 10. So I get 10 kilometers. Now it is very important that we counter check this answer whether this answer is right or wrong. So we take v square is equal to u square plus 2as. U is 0, v is 40. So 40 into 40 is equal to 2 into a is 80 into s. So let s is equal to 40 into 40 upon 2 into 80. Answer again comes 10 kilometers. That means whatever calculation we have done with the second equation is confirmed by the third equation of motion also. There can be much easier questions, there can be complicated questions. We will be doing complicated questions in our physical classes and the online classes. In case you want to solve some of the complicated questions, do send me a request in the comment section of this video. Definitely we will try to help you out. In the next lecture, we will study the graphical representation of motion, derive the three equations of motions graphically, which is very important because that question normally comes in the exams. And then after that, we will go in for derivation of average speed for uniform motion, which I promised you in my last lecture, from graph. See what type of non-uniform motions are there, graphical representation of those non-uniform motions, calculation of distances, average speed and all those. So till that time, keep watching the video lectures, keep studying, enjoy, keep safe.
and do not forget to like this video and subscribe to the channel. Thank you very much.